Good morning students. Today we will learn to find H.C.F by using prime factorization method. So let us start. What is prime factorization? To understand this, we just need to understand two things. First, prime numbers and second, factors. Student, as we have already learned prime numbers and composite number in previous video. So let us recall some prime numbers. ऐसे नंबर्स जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ, उसे ही प्राइम नंबर्स कहते हैं. लाइक 2, 3, 5, 7. क्या 9 प्राइम नंबर है? वेरी गुड. नो. व्हाई? क्योंकि 9 के मोर देन टू फैक्टर्स है, 1, 3 एंड नंबर इटसेल्फ. सो 9 ऑड तो है पर ये प्राइम नंबर नहीं है. सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते हैं. सो आवर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11. 11 के बाद 13 एंड देन क्या 15 प्राइम नंबर है? 15 ऑड तो है पर क्या ये प्राइम भी है? बिल्कुल सही, ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके भी मोर देन टू फैक्टर्स हैं, 1, 3, 5 एंड 15. सो 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर. तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17. सो स्टूडेंट, these are some prime numbers. So student, in prime factorization method, we use only prime numbers as a factor. Means prime factorization is a number written as the product of all its prime factors. So let us start. Example 1. Find the HCF of 64 and 48 by using prime factorization method. So first we will start with number 64. Now here 64 is composite number. It is also an even number. So we can divide it by 2 as 2 is smallest prime number. So let us start. 64 divided by 2. 2 3s are 6. 2 2s are 4. So we have here 32 and 32 is even number. So we can divide it again by 2 as 2 is a smallest prime number. So it divides 32 in 16 times. So 16 is a even number. So again we divide it by 2 in 8 times. Now 8 is also even number. So it is also divisible by 2 in 4 times. Now 4 is also divisible by 2 in 2 times. And then 2 is divisible by 2 in 1 times. हमें यहाँ पे तब तक divide करना है जब तक कि हमें 1 न मिल जाए. So student, these are the prime factors of 64. Now here we write the factors of 64 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Now let us do the prime factorization of 48. So as we know 48 is a even number, so we can divide it by 2 as 2 is a smallest prime factor. 2 2s are 4 and 2 4s are 8. 24 is also even number, so it is also divisible by 2 in 12 times. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 12 is also even number, so again we can divide it by 2 in 6 times. 2 6 are 12 and here 6 is even number, so we can divide it by 2 in 3 times. 2 3s are 6. Now 3 is prime number, it is divisible by number itself in 1 time. Now our prime factorization of 48 is over and these are the prime factors of 48. So here we write factors of 48 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Student, here we have completed our first step. Here we have find out the prime factors of 64 and 48. Now we do the second step. अब हम common factors इसके find करेंगे. And here 2 is common and this 2 is common. और इसके बाद इसकी pair बन रही है and after that इस 2 की pair बन रही है. Thus HCF of 64 and 48 is equal to जो भी हमें pairs मिले हैं prime factors के जो common हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख लेंगे. हमें कितने pairs common मिले हैं यहाँ पे? 4 pairs. तो 2 into 2 into 2 into 2. अब इसे हम multiply कर लेंगे. तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So here 16 is HCF of 64 and 48. Now let us take one more example. Example 2. Find the HCF of 284, 244 and 120 by using prime factorization method. So student, first we start with number 284.
Here 284 is even number, so we can divide it by 2 as 2 is the smallest prime number. So let us divide. 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 twos are 4. Now 142 is even number, so it is divisible by 2. So here we write 2 sevens are 14, 2 ones are 2. Now student, here 71 is a odd number, तो ये 2 से divisible नहीं होगा. ये प्राइम नंबर है तो इसलिए ये जो है वो नंबर इटसेल्फ से ही डिविजिबल होगा इन वन टाइम. सो स्टूडेंट, हियर दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 284. आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करने हैं नंबर्स को डिवाइड करने के लिए. नाउ आवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 284 इज ओवर. सो वी गेट द फैक्टर्स ऑफ 284 इज इक्वल टू 2 into 2 into 71. Now let us do the prime factorization of 244. So as we know 244 is a even number. So ये 2 से divisible होगा. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 twos are 4. Now 122 is even number, so it is divisible by 2 in 61 times. 2 6 are 12, 2 ones are 2. Now student, here you can see 61 is a odd prime number, so it is not divisible by 2. It is divisible by only number itself. So 61 से one time में divisible होगा. So here we get the factors of 244 is equal to 2 into 2 into 61. At last we find the factors of 120. 120 is इवन नंबर, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. अब आप ये सोचोगे कि मैम क्यों आप बार बार 2 से ही डिवाइड कर रही हैं? आप इसे 6 से भी तो कर सकती हैं, आप इसे 4 से भी तो कर सकती हैं. बट स्टूडेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर यूज करने हैं इसे फैक्टराइज करने के लिए. 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है. सो हम हमेशा स्मॉल प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं. सो वी डिवाइड 120 बाय 2. सो 120 is divisible by 2 in 60 times, and then again 60 is an even number, so we can divide it by 2 in 30 times, and then 30 is also even number. once place की digit 0 है तो इसे हम 2 से divide फिर से करेंगे, and then we get 15 and 15. see 15 is odd number. अब ये 2 से divisible नहीं होगा, तो अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, और ये 3 से divisible है. 3 5s are 15. And 5 is a prime number, so it is divisible by only number itself. Now student, these are the prime factors of 120. So here we write all the prime factors of 120. So let's write 2 into 2 into 2 into 3 into 5. So student, here we have completed our first step. हमने दिए हुए numbers के सारे prime factors को find out कर लिया. Now in second step, लेट्स चेक द कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे 2 कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, और इसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. यू कैन सी हियर द HCF ऑफ 284, 244 एंड 120 इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखते हैं. 2 into 2 इज इक्वल टू 4. सो स्टूडेंट, 4 जो है वो 284, 244 एंड 120 का HCF है. So student, this is how you can find out the prime factor of any given number. बस आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को ही यूज करना है नंबर्स को डिवाइड करने के लिए. I hope your concept is clear. Now it's practice time. So student, here I have given some question for your practice. So please solve it and we'll meet in next video. Thank you. Bye bye. Take care.